पहुंच चुकी हूँ and it's definitely much more cooler than Salzburg और जिस होटल में मैं ठहरी हूँ, which is the Hotel Adlers, is the same hotel in which Salman Khan and Katrina lived during the shoot of Tiger Zinda Hai. तो since hotel railway station से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर था, I've decided to walk down. Come. Look at those mountains out there. So pretty, so pretty. So I finally arrived at Hotel Adlers. Come along. So I am very excited to be here. Hello, hi. So this is Hotel Adlers where I'm staying tonight and it is definitely one of the best hotels in Innsbruck. And मैं particularly बहुत excited हूँ यहाँ पे रहने के लिए क्योंकि ए दिल मुश्किल और टाइगर जिंदा है के stars like Karan Johar, Anushka Sharma, Ranbir Kapoor, Salman Khan and Katrina Kaif have lived right here. In fact, here's a fun fact. जब सलमान खान यहाँ पे टाइगर जिंदा है की शूटिंग के लिए रह रहे थे तो इसी होटल के बाहर एक भीड़ जमा हो गई थी just to meet him and say him a hi. And now it's a bye. I'll see you tomorrow. Hi, can I get a room? Wow, looks like he's already sent me the money. That was fast. And you know the best part? मैं shopping उसके लिए करूँगी, लेकिन loyalty points मुझे मिलेंगे. करण जौहर ने अपने करियर के स्टार्ट की सारी मेगा हिट फिल्म्स लंदन और स्विट्जरलैंड में शूट की थी एंड आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने ए दिल मुश्किल के लिए ऑस्ट्रिया को चुना. वैसे सैल्जबर्ग, वियना और इंसब्रुक कवर करने के बाद भी ऐसे कई बॉलीवुड लोकेशंस हैं जो छूट जाते हैं बिकॉज दे आर अ लिटिल फार अवे फ्रॉम द सिटी, जहां राजू चाचा, तेरा नाम साथ रहे और महबूबा जैसी मूवीज शूट हुई हैं. बॉलीवुड फिल्म्स के साथ साथ इंसब्रुक में कई सारी एड फिल्म्स भी शूट हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल डेयरी मिल्क एंड मिल्टन टिफिन का एड. यू रिमेंबर दैट डेयरी मिल्क एड जहाँ पे क्यूट कपल एक दूसरे के साथ स्नो फाइट खेलता है, एंड दैट मिल्टन टिफिन का एड जहाँ एक फौजी के घर से गर्मा गर्म गाजर का हलवा आता है एंड ही शेयर्स इट विद हिज साथीज. वेल दैट्स द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड ऑल ऑफ दैट वाज शॉट हियर इन इंसब्रुक. So I'm on my way to the Nordkette mountain range and I've taken this cool cable car to get right on top, and you can't imagine the view. It's absolutely breathtaking. Alright, so I'm finally at the top of the Nordkette mountain range and it's really cold here. वैसे आपने इस ranges को और इस particular peak को बहुत सारी Bollywood movies में देखा है. आपको याद है वो scenes जहाँ हमारी Bollywood की heroines शिफॉन साड़ी पहन के love songs shoot करती हैं? Well, today I know exactly how difficult that must be because I am shivering when I'm clad with a jacket, jeans and everything. And वो लोग literally एक शिफॉन साड़ी में यहाँ पे डांस करते हैं. And of course you remember that scene ए दिल मुश्किल का जहाँ पे अनुष्का शर्मा wants to enact that same scene with Ranbir Kapoor and they come to this particular mountain range and Ranbir Kapoor cannot do it because he's feeling really cold. And I was so inspired to come to this mountain range when I saw those selfies with Karan Johar and Anushka Sharma on their Instagram, and that's exactly why I'm here. I'm loving it, but it's freezing cold. Well, अगर रोमांस से हटकर एक्शन की बात की जाए तो टाइगर जिंदा है मूवी की भी शूटिंग यही हुई थी. You remember the opening scene in Tiger Zinda Hai when Salman Khan saves his child from bulls? Well, वो एक्शन सीन यही शूट हुआ था at the Nordkette mountain range. In fact, सलमान खान के बॉडी डबल उस सीन को अपनी लाइफ का सबसे खतरनाक सीन मानते हैं. एंड बाय द वे, ये बात कई लोग नहीं जानते कि सलमान खान को ठंड से सख्त नफरत है.
just like me by the way. लेकिन जब Innsbruck decide हुआ था as a location, everybody thought कि ये सब देखकर सलमान खान का क्या reaction होगा. But he fell in love with Innsbruck, just like me again. What is stunning about shooting in Innsbruck is that obviously it's a beautiful small town, lovely people, great food, but the kind of facility that we wanted to shoot a film of size of Tigers in the Eye was all available. We had technicians that came from all over Europe to execute that huge action sequence, including real wolves which came from Budapest. So that it was a wonderful experience. This was the palace. कुछ याद आया? अगर याद ना आया हो तो मैं आपको याद दिलाती हूँ. टाइगर जिंदा है के गाना दिल दिया गल्ला में एक सीन में Katrina Kaif is dressed like a princess and Salman Khan and Katrina Kaif share this romantic dance number. Well, this is exactly where it was all shot and I'm so mesmerized by it right now. You know, this palace over the years has been renovated 3 times and now it has turned into a national museum जहाँ पे world-renowned artists की paintings showcase की जाती है. In fact, recently, Michael Dine की एक painting यहाँ पे showcase की गई थी, who also happens to be one of the greatest painters of all times. And by the way, you of course know that Salman Khan is also known for his artistic abilities. And in a recent auction, his painting was sold for a whopping 2.5 crore. Well, ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन. देखते रहिए और हमें फॉलो करते रहिए. Central Square is actually a very important and busy location of Innsbruck. और दिल दिया गल्ला जैसा ग्रैंड सॉन्ग को यहाँ पे शूट करना कितना डिफिकल्ट हुआ होगा वो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब स्पेक्टर की टीम यहाँ आई थी शूट करने के लिए तो उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी और फिर टाइगर जिंदा की टीम को भी यहाँ पे शूट करने की परमिशन नहीं मिली. एंड ऑल्सो जिस दिन वो शूट करना चाहते थे उस दिन सेंट पैट्रिक्स डे था, which is actually a very important festival for Innsbruck. And then the Tiger Zindai team went to the association and explained them how they want to shoot the song with thousands of candles and hot air balloons, and the association was very impressed and the permission was then granted. लेकिन वहाँ भी difficulties कम नहीं हुई because सलमान और कटरीना को देखने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई and किसी तरीके से उन्हें दूर रखा गया और शूटिंग कंप्लीट हुई. Owner of this magnificent hotel, Hotel Adlers. I've got with me Floren Ulj. Hello, and thank you so much for your time, but I have to say, what a hotel and what a view. Thank you for you having here. It's amazing you taking this chance to take a shots of our hotel, and it's a pleasure hosting you. So how long ago was this established? So we are currently operating the 6th year. So it was opened 2013 in total, yeah. Wow, and I hear that you've hosted a lot of Bollywood stars. A lot of our celebrities have made this hotel their homes. I mean, I think the biggest celebrity was probably Salman Khan when he shot Tigers in the Eye. And actually we're right in the room in the presidential suite, the biggest suite in Innsbruck with 130 square meters. And this is the precise room where he stayed in for almost a month. Oh, almost a month? Yeah. And what about Katrina Kaif, his co-star? Yeah, she stayed here a little less, approximately like 2-3 weeks, something like that. And she stayed in, of course, in another room. Thanks for being very specific. Yeah. I know the backstory of it, the background story, but they had separate rooms. That will go down penned. Let me tell you, that is going to go down penned with our audience. So, what are you doing to promote Innsbruck and your hotel in India? Is there a way? Is there a channel that you've been going along with to promote it? So I think we have a really good partners in India actually. The company is called Robinville, and they're cooperating with Bollywood Productions, and I think Innsbruck Tourism Board does a wonderful job in trying to get these productions to Innsbruck, and I think there's quite a force
going to India and trying to get them to know this beautiful part of Austria. Lovely. So Florin, would you like to say something to Salman Khan just in case he's listening to you right now? We're missing you. Come back. Drinks were amazing, by the way. Thank you so much, Florin. You've been Thank such you. a sport. Thank you. Thank you. So I'm right here at the presidential suite of Hotel Adlers, and this is exactly where Salman Khan stayed during the shoot of Tigers Zinda Hai. And the owner, that is Florin Ursch, just told me that he stayed in this particular suite for a month. Check it out, it is gorgeous, and you must check out the view. But so, now you want to go check out the bath? That's where it is. And there also happens to be another room which is not open right now, but hey, Salman Khan obviously gets the best of the best, doesn't he? I know it's really pretty and you just don't want to leave from here, but I guess we have to. That is the president's suite. जैसे आगरा के लिए ताजमहल है और दिल्ली के लिए द रेड फोर्ट, वैसे ही इंसब्रुक के लिए ये गोल्डन रूफ इसकी सबसे खास जगहों में से एक है। Will you remember that scene जब सलमान खान कटरीना कैफ को मनाने के लिए एक स्ट्रीट को पूरी तरह से कैंडल से लाइट अप कर देते हैं and then they have this romantic candlelight dinner? Well, it was shot right here. और उस सीन को शूट करने के लिए ऑस्ट्रिया को ये पूरा का पूरा लेन ब्लॉक करना पड़ा था, and I'm really thankful to the Austria government for actually supporting it. And I remember watching that scene in the theaters. It all worked out so beautifully that I couldn't keep my eyes off it, and now I am living it. वैसे दिल दिया गल्ला सॉन्ग को शूट करना जितना मुश्किल था, उसे बनाने में भी उतनी ही मेहनत लगी. It was the first time Vishal Shekhar and Atif Aslam came together for this song, and they really complemented each other. We are at the famous Old Town area of Innsbruck. और बुदापेस्ट और प्राग का ओल्ड टाउन एरिया देखने के बाद मुझे ये सारे ओल्ड टाउन एरियाज कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहे हैं. It's majorly because of these quaint pathways and the fact that everything here is around 500 years old. वैसे इंसब्रुक के इस ओल्ड टाउन एरिया में एक्शन जैक्सन का गाना कीड़ा भी शूट हुआ है. And you know what I love about that song is the starting line where Ajay Devgan goes like, "चल, इंडिया से डांस करने आए." I think that was pretty cool. In fact, एक्शन जैक्सन के उस गाने में इंसब्रुक के कई लैंडमार्क लोकेशंस के बजाय ओल्ड टाउन की छोटी-छोटी एरियाज में शूट किया गया है, which is so different and unique. So here's a quick travel tip for all you guys. आप जब भी इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, आप प्लीज अपने साथ फॉरेन करेंसी जरूर कैरी करें. लेकिन उससे भी ज्यादा आसान होगा मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड कैरी करना, which is actually applicable all across the world. So here's a quick travel tip for all you guys. Well, आप जब भी अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज़ अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड सेफली रखें, क्योंकि वो स्कैन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा. You know, यूरोप की सारी सिटीज़ घूमने का द मोस्ट कन्वीनियंट तरीका है द यूरो रेल. इनफैक्ट जब श्रद्धा कपूर भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ थी, शी प्रेफर्ड रेलवे. ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com. बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन. Banking partner PMC Bank, stylist partner United Colors of Benetton. Europe travel partner Rail Europe.